arrest of Arvind Kejriwal is imminent. That seems to be the big story right now. Is it going to happen any moment? The ED Additional Director is at the residence of the Chief Minister. Kapil Raj, the investigation officer in the case. Kapil Raj is the investigation officer in the case. Let's go straight across to Bhavtosh. The barricades have been brought in, Bhavtosh, and now a fresh reinforcement has also been done. What do we expect, Bhavtosh? Well, as far as what will happen next, it's still something that only ED officials can tell us. But the Aam Aadmi Party has decided that they will go to the Supreme Court and will try getting some kind of relief from them or some kind of protection from coercive action. But here at the ED headquarters, the security has been beefed up. In fact, paramilitary forces have been deployed along with Delhi police. What we can tell our viewers with confirmation are two things. One, his questioning have started. The first summons were served to him on 2nd of November, and then for 9 summons were served to him. He did not join the investigation. Searches have taken place. Some electronic gadgets have been seized, including 4 mobile phones as well as 2 tablets. And Padmaja, more importantly, a high drama has taken place. ED officials are at his residence along with paramilitary forces. Will he be taken here at ED headquarters? Remember, this case is being probed by the HIU unit of the Enforcement Directorate, which have served. Yesterday, for the first time, the Additional Solicitor General said that 700 summons have been served in this case and 15 individuals have been arrested. Several companies and entities have been made and accused. And today, the High Court said that why didn't you arrest him when he did not join the investigation at the first place? To which Additional Solicitor General said that it doesn't mean that we will arrest him or not arrest him. We are just asking him to come and join the investigation. And then, in a very dramatic development today, within an hour or so, the ED officials reached his residence. Searches are taking place. It's many ways, Padmaja, it is a rerun of what happened last Friday when ED officials went to the residence of K. Kavita. Okay. There also search warrants were served to her, and then her voluntary statement was recorded. Will it be the exact rerun of what happened with K. Kavita, or this would only end with searches and voluntary recording of the statement? It will all depend on will he get any kind of relief from the Supreme Court. So all eyes on what happened in next few hours. Will the Supreme Court intervene in this matter, or Arvind Kejriwal will be brought here and further questioning will take place? Okay, Priyank is also joining us from outside the house of Arvind Kejriwal. Fresh reinforcements around you now, and apparently a circle has been made there. Priyank. Yes. Yes, Padmaja, there have been series of and layers of barricade which has been placed by the Delhi police. First is this particular iron gate, which was made after looking at the kind of protests which used to happen outside the residence of Arvind Kejriwal. This gate would be approximately 200 to 300 meters away from the main entrance of Arvind Kejriwal. And later to that, if you see the placed by the Delhi police official along with the RAF to stop any kind of protest inside this flagship road. But very interesting development happening, Padmaja, when the 12 officials have already gone inside. We have seen approximately 5 vehicles of the CAPF going inside with CAPF official, which is certainly not giving a good indication for the Aam Aadmi Party, because the officials were there. In the normal summoning case, 5 officials could have gone, but this time a dozen officials being there inside, then another senior official coming along with 5 vehicles full of CAPF officials, and not trusting on the Delhi police, looking at the kind of situation which had happened at K. Kavita's residence. The ED officials are also not leaving any possibility of any kind of stoppages from the protesters, I beg your pardon, and the supporters of Aam Aadmi Party. All those MLAs who were already inside this have also been told to leave this location. So, huge amount of security today being day and heavy traffic flow already being witnessed ISBT and okay, we'll just try and fix the line that we have with you, Priyank. Meanwhile, let's go across to Rame. Rame, what do you see?
So there's a huge congestion at the right and the left side of the road which leads to the Arvind Kejriwal residence. If I can show, these slogans have just started. Many party workers have reached here and they have started raising slogans. If I could ask my video journalist to show, you can see that people are raising slogans. If I would ask some of them, what are they protesting for? Madam. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, नहीं होगी। जब जब मोदी डरता है, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी जी अपनी घरवाली का तो सुरक्षित रख लेते हैं। Okay. देश के All right. So there has been quite some mobilization already. Aam Aadmi Party's ministers, Atishi, Saurabh Bharadwaj, all reaching the chief minister's residence. Now protesters, supporters have also reached there, and we are being told that just now the Delhi Legislative Assembly Speaker Ram Nivas Goyal has said even if Arvind Kejriwal is arrested, he will not resign. Sameer ji, एक बात तो तय है that आम आदमी पार्टी is going to make a big election issue out of it कि हम तो लड़ेंगे इस तानाशाह से। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी से जो समन्स मिल रहे थे, 1 से लेकर 9 सम्मन तक, जिस तरीके से केजरीवाल ने उसको अवॉइड किया और जिस तरीके से लगातार वो पत्रकार वार्ता करते थे, सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बताने की कोशिश करते थे कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के पहले अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट से जब क्लियर हो गया कि अरविंद केजरीवाल पे ईडी कार्रवाई कर सकती है, उस पर कोई रोक नहीं होगा। और आज ईडी ने, हाईकोर्ट ने पूछा था ईडी से कि क्या पहले इसमें अरेस्ट करते हो, तो ईडी ने बताया कि अभी तक हम 700 लोगों को सम्मन दे चुके हैं और सिर्फ 15 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है इसके अंदर। अब देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, के कविता की गिरफ्तारी के बाद मुझे लग रहा है कि अब यह तय है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में अरेस्ट होंगे। ईडी के पास पुख्ता सबूत आ चुके हैं इस बात को लेकर और इसी कारण ईडी बार-बार उन्हें सम्मन के लिए दे रही थी और अरविंद केजरीवाल बार-बार बच रहे थे। कोर्ट से जब राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, तो यह तय था कि ईडी जांच करने के लिए स्वतंत्र है और कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, आज ईडी उनके घर पहुंच चुकी है और मुझे लग रहा है अब किसी भी समय अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो सकते हैं। All right, Pratyush Kant, today the counsel for Arvind Kejriwal argued that if it makes you happy, arrest me after the elections. Why are you doing it right now? Itne mahino se you sent 9 summons, didn't do anything. Arrest, but do it after elections. Ma'am, do you think the country and the agency, the judiciary runs like this? Do you think the judges, the investigators, people who find out all the documents, the whole process which is involved, then you go to lower court, high court, division bench, Supreme Court, the process will change for elections? It doesn't. Arvind Kejriwal is a literate man. He knew all the time. So many cases were taking place in different courts, high court, double bench, single bench, lower court, and they were getting relief from nowhere. I'll just take you back, the senior most judge of the apex court, the Supreme Court of India, when he saw the file, he said, I can clearly see a trail of money, over 300 crores. I think it has to be investigated. Okay. Not from a single court did he get any relief. The lordships today, when they saw the case, because see, those are the documents which you and I have not seen. It is only they are seeing those documents. So after seeing those documents, they say, what are you doing? The investigation has to go on. You have to join the investigation. Okay, speaking of documents, we are being told that all the gadgets have been seized, Bhavtosh, from Arvind Kejriwal, and the data dump, Priyank, is being taken from those gadgets. So all of his gadgets have been taken away and पूछताछ के पहले ही ईडी जब्त कर चुकी है. Soon they may be taken, Sanjeev Kaushik, to the ED office. मुझे लगता है कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले विपक्षी पार्टियों के खाते को बंद करवा रही है, सीज करा रही है, तमाम विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में भिजवा रही है,
क्या इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी क्या? सवाल यह है कि कोर्ट ने आज क्या कहा? कोर्ट ने यही कहा, लगातार ईडी पहुंची और कही कि नहीं, ये सुनने योग्य याचिका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर सुनवाई जारी रहेगी। इसके बावजूद दरवाजे पे पहुंच जाना और इस तरह से रात ठाल लेना, जब जिद ही कर ली है ईडी गिरफ्तार करने के लिए तो वो गिरफ्तार कर ले। अब दिल्ली की जनता को जवाब देना है, देश की जनता को जवाब देना है कि ये तानाशाही चलेगी या लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा। कोर्ट की भी बात नहीं माने आप संस्थानों की भी बात नहीं माने। आप लगातार ये बात कहते रहे कि नहीं, केजरीवाल साहब ये बात कहते रहे कि आपने जो हमें समन दिया, आप ये मुझे बता दीजिए कि किस हैसियत से आप बुला रहे हैं, गैर कानूनी है ये। और उसी के अगेंस्ट में सारी बातें आगे तक बढ़ी है। तो कम से कम इंतजार तो कर लेना चाहिए ना 22 अप्रैल तक। लेकिन उसके पहले ही इस तरह की स्थिति पैदा कर देना, दिल्ली में अराजकता की स्थिति पैदा कर देना जानबूझ करके, और तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को इलेक्शन से पहले इस तरह से प्रताड़ित करना, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता देख रही है, बड़े गौर से देख रही है, और जवाब जनता ही देगी अब। All right, let's cut across to Ramya also for just a second. These are the latest visuals. The rapid action force is present. The barricades have been brought in. Arvind Kejriwal's devices have been seized, and the data dump is being taken from there steadily. As Ramya is reporting, the number of Kejriwal supporters have also gone up. What's the next plan of action, Ramya? So let me say that after the central government forces reached the residence, the forces of Arvind Kejriwal has also reached now, and they have sat on the roads protesting, raising slogans against the Prime Minister Modi, raising slogans in the favor of Arvind Kejriwal. It is all happening outside the lane where Arvind Kejriwal's official residence says. Heavy police deployment, heavy central forces deployment. But if we would see the zeal, the enthusiasm of the protesters, it is also no less. It might be that these protesters are less in numbers than the police forces and the central forces. However, their zeal and enthusiasm is at peak. Again and again they have the same slogans. Modi teri nahi chalegi. Such slogans are being raised here today. We are standing right outside the lane of Arvind Kejriwal's residence. The gate has been completely blocked. Let me say sealed by the Delhi police, sealed by the central forces. Strong barricades, huge number of barricading has been put, and the police has formed a circle. If I would ask my video journalist to show that how a circle is formed, see, so here we have different paramilitary forces, rapid action force, Delhi police officials on the left side of mine, while central forces on the right side. So a circle has been made. See, that is how they have Geraud. Let me call it Geraud of the Arvind Kejriwal's residence today. So it is also being said today that if ED had come to deliver the summon, the 10th summon, it wouldn't have come with this much preparation, this much force. What is happening inside is something different. We cannot access what is happening inside, though we are trying our best to reach inside. However, huge presence. See, that is the gate. That is the gate which leads to Arvind Kejriwal's residence. However, it has been blocked by the Delhi police barricades. Delhi police officials have formed a chain around it. They are standing, and no one is being let inside. Okay, protesters are being detained. Let's listen to a few of them. पर समीर जी, hypothetically speaking, one doesn't know कि अगर आज गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, पर गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटक रही है। कई लोग सवाल ये पूछेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री का मेंटल कौन संभालेगा? क्या ये हेमंत सोरेन मॉडल होने वाला है, या फिर ये लालू मॉडल होने वाला है? क्या होगा दिल्ली में? देखिए, जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जब लगातार केजरीवाल को सम्मन दिए जा रही थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, तब यह तय था कि ईडी के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जिसमें केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि जिस दिन के कविता की गिरफ्तारी हो गई थी उस दिन तय हो गया था कि अब अरविंद केजरीवाल के इसमें गिरफ्तार होना तय है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे जो आज उन्होंने कोर्ट में कहा है कि हमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है। मुझे लग
लग रहा है जिस तरीके से आज वहां पर डिप्लॉयड किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और जिस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टर आज कोर्ट में सुनवाई होने के बाद पहुंचा है, मुझे लगता है ये तय है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। और ये पूरा हेमंत सोरेन वाले प्रोसेस में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जितना ड्रामेटाइजेशन किया जा सके, जितना इसको नाटकीय बनाया जा सके, जितना चुनाव के पहले इसको जनता की भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाए कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये तय था कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे और अब बहुत कम समय बचा है। मुझे लगता है कि पद्मजा आज ही गिरफ्तार हो सकते हैं। बताया अगली मुख्यमंत्री कौन होंगे या होंगी? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सौरभ भारद्वाज बार बार कह रहे थे कि हम तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो ये सच में तिहाड़ जेल से चल सकती है? पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को रिजाइन करना पड़ेगा। अब ये देखने की बात होगी कि कल उन्हें जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अगर गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होना तय है। आज हो सकते हैं 99% मुझे लग रहा है आज गिरफ्तार होंगे। जिस हिसाब से फोर्सेस रखी गई है, जिस हिसाब से उनके डिजिटल एविडेंस करके छोड़ दे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज कोर्ट के बाद अगर सीधे आए तो मुझे लगता है कि बहुत पुख्ता सबूत होंगे उनके पास और आज केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर आज नहीं भी होते हैं तो ये मान के चलिए कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं है केजरीवाल के गिरफ्तार होने का। अब ये केजरीवाल को तय करना है कि वह अभी जाकर रिजाइन करते हैं, उसके बाद अरेस्ट होते हैं, जैसे हेमंत सोरेन ने किया था कि राजभवन जाके रिजाइन किया था उन्होंने। चंपई सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। फिर भी सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल है कि किसके स्वेरिंग इन होगी? अगर गिरफ्तारी होती है तो रेजिग्नेशन तो हो सकता है, बट स्वेरिंग इन किसकी होगी? एक मैडम चीफ मिनिस्टर की भी बात हो रही है, ये बहुत बड़ी अफवाह उड़ी थी। वही बनेगा जो एमएलए होगा, क्योंकि एलजी किसी ऐसे मतलब को अलाउ नहीं करेंगे जो एमएलए नहीं होगा। नहीं, बट उनके पास तो वक्त होता है ना, 6 महीने में आप उनको इलेक्ट करवा दीजिए। नहीं, अब नहीं, यह पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसकी परमिशन नहीं दी, एलजी तैयार नहीं होंगे। मुझे लग रहा है किसी एमएलए को ही बनाना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। नो, बिकॉज द अदर पॉलिटिक्स ऑल्सो इज लाइक इन द केस ऑफ कल्पना सोरेन। चाहते तो वो भी थे कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, बट अंदर से ही आपका विद इन योर पार्टी पीपल डिड नॉट अग्री। नाउ सीता Soren has left precisely because of that reason. But let me quickly get an update from Bhavtosh, who is live with us now. Bhavtosh, what is the activity happening right now and what next? Well, as far as at the AD headquarters, the security arrangements are there. In fact, the barricades are still there. We are right outside the gates of AD headquarters. A meeting is going on. The all-important meeting is going on to decide the fate of Arvind Kejriwal. In many ways, also the case itself, it's in the last lap as far as the excise policy case is concerned. Several charge sheets have been filed, but having said that, Aam Aadmi Party leaders have also decided to knock the doors of the Supreme Court, seeking some kind of legal help or some kind of intervention from the Supreme Court. So next few hours are very important as far as this case is concerned. Are ED raids over? Will the team leave from the residence of Arvind Kejriwal? Are searches over? Or will Arvind Kejriwal come out from his residence and speak to his supporters? It all depends. Fast-paced developments are taking place. No one and we are constantly going to be live, but I have to take a very quick break at this point. We are back on this big story at 9 p.m. on News Hour with Nalka Kumar. Don't go anywhere.